So what's up guys, Tech Around is back and today we will learn what is Pykit, what does Pykit and what it is for. So basically Pywhatkit is a module that helps you search on YouTube, Google or Wikipedia or send a WhatsApp message. So सरल भाषा में कहें तो it's all about searching and sending. So first we'll check the installation. We'll install Pywhatkit. Oh, it's pip install Pywhatkit. Requirement already satisfied. Okay, so I think I'll just minimize it. So first we'll import it. Import Pywhatkit as pwt. So first we'll create a variable here, queue. We'll take input in it, like enter your question here. So we are using it because अगर हमने कोई क्वेश्चन सर्च करना है गूगल पे या कोई वीडियो सर्च करनी है यूट्यूब पे, वील नीड दिस वेरिएबल और यू कैन जस्ट डायरेक्टली पुट इन द argument or a function you may say. So we'll like pwt dot search and here it says question. So हम इस वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर करेंगे वो इसमें सर्च हो जाएगा. ओके, सो we'll just start it. It's like who is the CEO of Google? It would just open Google Chrome. और इसने यहाँ सर्च कर दिया, इसे सुंदर पिचाई. And now we'll just minimize it. Now there are two more functions like info for Wikipedia and play on YT for playing videos on YouTube. So we'll just use the play on YT first. Play on YT and video name or URL. So जो हमारे Pywhatkit वाली वो है मॉड्यूल है, इसके अंदर एक कमांड फंक्शन होता है प्ले ऑन वाईटी. सो या तो आप इसके अंदर डायरेक्ट यूआरएल डाल सकते हो उस वीडियो का, वो एग्जैक्ट वीडियो प्ले कर देगा, या वीडियो नेम डाल दो किसी भी उसका, तो वो एक रैंडम वीडियो या टॉपिक डाल दो, उस पर एक रैंडम वीडियो चला देगा. सो वी विल जस्ट लाइक स्टार्ट इट एंड आई विल पुट हियर क्यूबिक्स शॉट्स. Cubics shots. Enter. It would open Google Chrome and would just play a random video here. Stop using campfires like this. So third is the info. So info just searches the page for on Wikipedia and just shows some lines on it. इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है, बट अगर आपने कोई AI बनाना है या जैसे कोई चैटबॉट बनाना है तो आपके लिए हेल्प हो सकता है. तो हम इसमें वही क्वेश्चन वेरिएबल डालेंगे और इसके अंदर हम स्पेसिफाई कर देंगे हमें कितनी लाइंस चाहिए. जैसे मेरे को चाहिए 5 लाइंस चाहिए and I'll just put here enter your
topic here, search, it's like SAR bomb and see it just, इसने मेरे को बस 5 लाइंस बताई है कि ये SAR bomb के बारे में. So it's all for today. Basically आज हमने Pywhatkit के functions देखे and nothing else, installation, functions and where you can use it. So thank you guys and see you next time.